Hello everyone, welcome to the afternoon session. Good afternoon, sir. Can you hear me clearly? Yeah, very good afternoon, Anuj. I'm just setting up the frame. Just give me a minute. Sure. So guys, we have Arpit sir with us, will be taking this session, and also he will be taking option strategy session on this Friday at 4 p.m. The event will be scheduled by today, end of the day, so don't forget to join in. Tomorrow we have two expiries, one is commodity and one is Sensex. The events are scheduled, feel free to go and check out. You can start dropping your queries, we will be happy to take it up one by one. We'll start with our Nifty, index outlook. Probably if we have some good opportunity, index trade, and then we'll move on to the stocks, BTSTs, and then from there we'll take up some queries. Yeah. Very good afternoon, guys. We are good to start, Anuj? Yes, sir. Over to you. Okay, perfect. Very good afternoon, guys. Welcome to weekly expiry on Monday. So now there are a lot of changes that are happening on a couple of weekly basis. So Sensex expiry has shifted from Friday to Tuesday. Coming straight onto the market setup. First, we'll talk about the broader indices, then the benchmark indices, Nifty, Bank Nifty, Sensex, mid cap, small cap, sectoral, which are looking weak, which are looking strong. Few BTST or STBT ideas depending on the market setup. If any option trades that are possible, that will try to figure out and try to share. So before starting with that, I just want to confirm the screen is visible, Anuj? Yes, sir. The screen is visible. Okay, perfect. So first and foremost, starting with Nifty, in continuation with the view, last week on Friday session, we have given a view for indices, and that time itself, we recommended a couple of things. The looking at the market outlook, Nifty, Bank Nifty, both were in bear grip, and so far the story is still turning into the red territory itself. Today it has been bleeding all around the corner, whether it's the small cap, whether it's the mid cap, or whether it's the benchmark indices. So if we see overall setup wise, Nifty again a gap down, some recovery in the first half of the session, but again it fell lower and now also trading near day's low. So it's Nifty is almost down by 1.5%, roughly 350 points cut on the benchmark index. 23,080 is the spot level. So if I talk about the technical structure, strong breakdown below 23,500 levels. So I'll just open up the weekly chart. If I see the overall weekly chart from last 8 to 9 weeks, Nifty was trading between 23,350 to 24,000, but आज हमने एक fresh breakdown देखा है weekly chart पे below 23,450, 23,500. So clearly on the daily scale, on the weekly scale, it is in strong bear grip. डेली स्केल पे भी देखें तो लोअर हाइज लो उसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में पिछले 6 दिन से लोअर हाइज का स्ट्रक्चर बना रहा है, 200 डेमा के नीचे है. सो ऑल इन ऑल अगर आप देखें सो स्ट्रॉन्ग बेयर ग्रिप में है. सो लेवल्स के बारे में हम बात करें, पहले 23,333 एक मेजर सपोर्ट हुआ करता था. हम काफी टाइम इस पे बात भी कर रहे थे, काफी मेजर सपोर्ट वर्क भी हो रहा था. अब गोइंग फॉरवर्ड 23,333 जो एक पहले सपोर्ट हुआ करता था, अब वो हर्डल का काम करने लगेगा. 23,333, 23,400 का जो बैंड है वो एक सप्लाई जोन बन जाएगा. नीचे में 23,000 और फिर 22,800. सो ओवरऑल सेटअप के हिसाब से हमें लग रहा है कि अगर यहाँ पे 23,500 के नीचे रहता है तो जल्द ही हमें 22,800 के लेवल भी निफ्टी में दिख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में. सो स्टैंड्स वाइज सेल ऑन बाउंस है. क्लियरली स्क्रीन पे शार्प बाउंसेस आ रहे हैं, बट जैसे बाउंस आ रहे हैं तुरंत ही वो वहां पे अपर बैंड पे सेलिंग प्रेशर है. सो तक 23,350 के नीचे रहता है, बायस वुड बी नेगेटिव फॉर डाउनसाइड मूव टुवर्ड्स 23,000 एंड देन 22,800. अब हम अगर बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, सो बैंक निफ्टी में भी स्ट्रॉन्ग वीकनेस है. अगर आप वीकली स्ट्रक्चर देखें तो ब्रेकडाउन दिया था 49,500 के नीचे. डेली स्केल पे पिछले 7 से 8 दिनों से लोअर हाई लो लोज बना रहा है. ऑलमोस्ट हमने 3,000 पॉइंट्स का कट देखा है ऑलमोस्ट एक वीक में बैंक निफ्टी में. तो क्लियरली बेयर्स की ग्रिप में है. बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करें हम, सो बैंक निफ्टी भी पहले जो एक 48,500, 48,600 सपोर्ट जोन हुआ करता था, अब वो हर्डल बनने लगेगा.
आज बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1.5% डाउन है. मूवमेंट स्लो है बट स्टिल कोई भी भाव पे रिवर्सल नहीं है. सो लेवल्स के बारे में बात करें हम, बैंक निफ्टी जब तक 48,500 के नीचे रहता है, हमारा सेल ऑन बाउंस की स्टैंस ही रहेगा बैंक निफ्टी में, नीचे में 47,500, 47,250 लेवल्स के लिए. Along with that, if I look at the chart of India VIX, so definitely India VIX, as you start mentioning at the start of the series only, January series में volatility काफी रहेगी और आज हमने spike भी देखा 7 to 8% का India VIX में. So clearly एक bias जो है volatile है, at the same time bearish grip में है. So India VIX volatility बढ़ रही है guys. So position sizing, overnight position, leverage position guys, be careful. लास्ट सेशन में भी हमने सेम चीज बोली थी कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आउटलुक वीक है एंड अकॉर्डिंगली आज अगर हम देखें स्पेशली ब्रॉडर मार्केट के बारे में, सो ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा पेन है. निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप इज डाउन रफली अराउंड 2.5% एंड ऑल अक्रॉस सेलिंग वी आर सीन अक्रॉस द बोर्ड. A couple of things that I would like to mention over here, except IT sector, selective IT pockets, majorly the breadth is the grip of the strong bears, पूरे bears के grip में ही हैं. हमने लास्ट टाइम सेशन में वो भी डिस्कस किया था कि आईटी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं रिलेटिवली. आज भी इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक रिलेटिवली बेटर है और रियलिटी, पीएसयू स्टॉक्स, एनर्जी स्टॉक्स सब में वीकनेस है और उसमें काफी अच्छा मोमेंटम भी है. गोदरेज प्रॉपर्टी का हमने पुट का कॉल भी दिया था फ्राइडे को एंड वी हैव सीन गुड मोमेंटम फ्रॉम 75 लेवल्स टू ऑलमोस्ट 120 प्लस लेवल्स. जो पुट दिया था हमने 2400 का पुट दिया था गोदरेज प्रॉपर्टी का. अक्रॉस द सेलिंग है गोदरेज प्रॉपर्टी, डीएलएफ, ओबरा, रियलिटी. सो इफ यू सी अभी जो मार्केट का ग्रिप है वो बेयर्स के फेवर में है. सो हमें जो पोजीशन साइजिंग रखनी है वो बेयर्स के फेवर में ही रखनी है. करंटली कोई भी मेजर रिवर्सल जब तक नहीं आता है, डोंट ट्राई टू बॉटम फिशिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड लाइकवाइज सो हम सेक्टर्स के बारे में बात करें, कमिंग टू सेक्टर्स, सो एक्सक्यूज मी, निफ्टी आईटी रिलेटिवली स्टिल बेटर है और उसमें इन्फोसिस, एचसीएल टेक ही रिलेटिवली बेटर है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखें तो ऑल राउंड सेलिंग है, whether it's reality, whether it's PSU banks, whether it's energy, whether it's auto, so all round selling is there. The best way to play such move is to keep your positions light, try to play the intraday swings, go with option spreads or option strategy in indices and stocks. That would be very much helpful. And we have this session also coming week, so definitely we'll try to guide you as much as possible how to play the strategies in such volatile or bearish markets. सो सेक्टर स्पेसिफिक वाइज में बात करें, सो आईटी को छोड़ के बाकी सभी सेक्टर्स एक पेन में है. निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में हमने बात किया. नाउ इसी के साथ अगर हम सेंसेक्स के बारे में बात करें, सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है. सो ओवरऑल सेंसेक्स भी देखें तो सेंसेक्स इज आल्सो डाउन बाय ऑलमोस्ट 1.5%, डाउन बाय 1000 पॉइंट्स. 76,300 भी चल रहा है. 76,200 का 200-300 का पुट हम ट्रैक कर रहे हैं. सो उसमें अगर कोई मोमेंटम रहेगा तो डेफिनेटली विल अपडेट ऑन दैट. Apart from that, if I see stock wise idea, काफी अभी भी weakness है. So what we can do, Anuj, in the meantime we can take couple of stock queries and then I'll look out for stock option trades on the put side because momentum काफी अच्छा stocks में भी, और अगर index में अगर Sensex पे हमें कोई trade setup मिल रहा है तो वो भी हम update कर सकते हैं. So we can take couple of stock queries in the meantime and then we can go with the flow as per the STBT trades or BTST trades if we get any opportunity. Sure, sir. Indian hotels bought at 764. View on short-term plays. Indian hotel 767. 767. Yeah, just a second. 767. Okay. Yeah. 767. So I think he's just the person I bought it recently. So chart wise देखे तो अगर mid cap small cap दोनों ही पेन में है. एंड इफ आई सी डेली स्केल पे लो राइज का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, पिछले 7 से 8 दिन से गिर ही रहा है रोज. अगर हम वीकली पे भी देखें सो प्रीवियस एक जो मेजर सपोर्ट जोन हुआ करता था 720, दैट इज अ मेजर सपोर्ट. ओवरऑल ये जो काउंटर है रिलेटिवली मंथली स्केल पे बेटर है बट बिकॉज ऑफ मार्केट वीकनेस काफी वीकनेस दिखी है. सो लेवल्स के बारे में बात करें तो 720 725 का एक मेजर सपोर्ट है. ऊपर के लेवल में 770 और फिर 800. सो आई थिंक अभी बाइंग प्राइस के पास में ही है, सो बेटर है अभी या तो होल्ड कर सकते हैं. 725 का आप लेवल रखिए दिमाग में, जब तक 725 के ऊपर है तब तक सेटअप ये स्टिल ठीक है. इमीडिएट बेसिस पे ऐड मत करें बिकॉज मार्केट खुद जो है वो एक फ्री फ्लो में है और नॉन स्टॉप हमें मोमेंटम दिख रहा है मंदी की तरफ. सो वेरी सिलेक्टिव बाइंग स्टॉक्स में एक्शन है.
Sir, should I take Nifty 23,400 call for this week? Okay. So as we're discussing about Nifty, we are totally in bear's favor, guys. We are in the bearish stance. 23,400. So levels के बारे में मैं जब बोलूँ, जब तक 23,333, guys, I'll repeat, 23,333 जब तक निफ्टी स्पॉट में क्लोजिंग नहीं आता है, don't change your stance. Better, I would advise go with puts. That would be better because जो ट्रेंड है हमें वो फॉलो करना है. ट्रेंड इज योर फ्रेंड, स्पेशली इन इंडेक्स एंड इन मार्केट. जितना फ्लेक्सिबल है उतना बेटर है. सो कॉल लेना तो सबसे पहले मना करेंगे. उसके साथ लेवल्स वाइज में 23,333 जब तक उसके नीचे है, निफ्टी में हमारी सेल की सलाह रहेगी. सो बेटर अवॉइड बाइंग कॉल साइड, look for put side trades. That would be much better and much more rewarding in this market. So Britannia 5,000 call bought at 91. What to do? Britannia 5,000 call. ओके, सो इफ आई सी द सेटअप वाइज एफएमसीजी स्टॉक्स में उतना पेन नहीं है, बट अगर आप देखें तो ऑलरेडी उसमें सेलिंग काफी अच्छी खासी हो गई थी पिछले सीरीज में सिर्फ. डेली स्केल और वीकली सेटअप पे अगर देखूं मैं पिछले काफी दिनों से, सो वीकली स्केल पे रेंज में ही ट्रेड कर रहा है. डेली स्केल में भी एज ऑफ नाउ कोई मेजर मोमेंटम नहीं है, नया गिर भी नहीं रहा. बट जैसे आपने ऑप्शन बाय किया हुआ है 5,000 का, सो मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आप लेवल्स में ध्यान रखिए. 4850 एक इंपॉर्टेंट लेवल है. जब तक इसके ऊपर है यू कैन होल्ड दिस कॉल. ऑल्सो अभी 13 जनवरी है तो मंथली एक्सपायरी को टाइम है. सो 4850 का लेवल आप ध्यान रखिए. उसके ऊपर है तब तक आप होल्ड कर सकते हो, पर ध्यान रखिए बिगर ट्रेंड ऑफ द मार्केट इज इन पेन, तो जिसके वजह से प्रोबेबिलिटी कम है. सो 4850 के एसएल से आप होल्ड कर सकते हो. अगर मोमेंटम बिल्डअप नहीं हुआ अगले 2 से 3 दिनों में तो बेटर टू एग्जिट दैट कॉल. Sir, Vijaya Diagnostic, please. विजया Diagnostic. सो अगर हम सेटअप वाइज देखें विजय डायग्नोस्टिक, तो सिलेक्टिव डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में जब हमने लास्ट वीक थोड़े वायरस की न्यूज सुनी थी तो वहां पे एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हुआ था. व्हाट इज द बाइंग प्राइस? हैव दे मेंशन अनु? No, sir, they have not mentioned the buying price. No problem. So the trend of the stock is very strong. Clearly high rise, high low structure is intact on weekly scale. मार्केट की वीकनेस के बाद भी अपने स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहा है. वीकली स्केल पे हाई की तरफ ही है. डेली स्केल पे अगर देखें तो थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ ऊपर की तरफ से, बट एक मेजर सपोर्ट जो है 1150 1160 का है. तो जब तक इसके ऊपर है कंटिन्यू टू होल्ड द स्टॉक. ऑल्सो गाइज अगर आप मार्केट ब्रेथ देखें सो टोटली बेयर्स की ग्रिप में है, जिसके वजह से जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है. अगर पैसा बन रहा है तो बेटर टू बुक प्रॉफिट्स. अगर होल्ड करना है तो 1160 के स्टॉप लॉस से आप ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हो. सेटअप ओवरऑल स्ट्रॉन्ग. इन द मीन टाइम आई लाइक टू, एज हम देख रहे कि काफी स्टॉक्स में वीकनेस है, तो हम देख रहे हैं कि काफी स्टॉक्स में मोमेंटम भी है. सो एक स्टॉक ऑप्शन के थ्रू अगर हम देखें एबीबी का चार्ट, सो एबीबी का पुट हम देख भी रहे हैं. चार्ट सेटअप वाइज डेली और वीकली स्केल पे फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है. 6,300 के नीचे अभी चल रहा है स्पॉट में 6,120 6,150. सो आई थिंक स्टॉक ऑप्शन में काफी मोमेंटम भी है. सो वी आर लुकिंग एट द लेवल्स. कौन से लेवल पे एंटर कर सकते हो, तो एक हम स्टॉक ऑप्शन ट्रेड में एबीबी पे हमारा ध्यान है जो हम प्ले आउट कर सकते हैं. सो जस्ट गिव अस कपल ऑफ मिनट्स. वी आर लुकिंग एट द प्रीमियम की कौन से प्रीमियम को प्ले कर सकते हैं. 6,000 का पुट अभी चल रहा है एबीबी का अराउंड 108 110 के अराउंड 105. सो विल ट्राई टू टाइम दिस एंड विल अपडेट ऑन दिस कि क्या स्टॉप लॉस और टारगेट से लेना है. Also guys, you have to keep this thing in mind. जैसे आपकी पोजीशंस अगर फेवर में नहीं आ रही है, ट्रेडिंग ली हुई है, बेटर टू रिड्यूस, बेटर टू एग्जिट, बिकॉज अगर आप होप पे होल्ड कर रहे हो सो ये मार्केट फिलहाल वैसा है नहीं. सो बेटर गाइज एग्जिट इन सम लॉसेस, दैट विल बी मच मोर रिवॉर्डिंग. एंड इन बिगर टाइम फ्रेम एज मार्केट में थोड़ी रिकवरी देखेगी, सो डेफिनेटली गेट अपॉर्चुनिटीज. सो राइट नाउ इफ यू सी द मार्केट सेंटिमेंट, मार्केट ब्रेथ, everything is in bear's grip. So play that side. Avoid going aggressive long. कोई भी मेजर रिवर्सल आएगा that is fine, but in the meantime जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में वीकनेस है, better be on the put side. So ABB का अगर हम देखें तो जो हम पुट के बारे में बात कर रहे हैं अभी चल रहा है 107. So ABB का पुट आप बाय कर सकते हैं 95 से 100 की रेंज में. ABB पुट 6,000 का पुट मंथली सीरीज 95 से 100 की रेंज में बाय कर सकते हैं. 75 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 150 के टारगेट के लिए. So I'll repeat, ABB put
6000 का पुट आप बाय कर सकते हैं 95 से 100 की रेंज में। 75 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर 150 के टारगेट के लिए अभी 106 चल रहा है। Sir, I'm just repeating. ABB India 6000 put, buying at 95 to 100, stop loss 75, target 150. Yes. In the meantime, also we're seeing quarter earnings season start हो गया guys, and whichever stocks you guys have, please also check for the trading bet. अगर आपका result season है तो उसके result date please mention करके रखिए, note down करें, because after result or pre-result also we see a very huge swings in the stock. So please वो आप ध्यान रखिए. Also budget आने वाला है, so volatility पूरे month में रहने वाली है due to some other factor. Apart from that, if we see the sector wise, we have seen pain and that pain is likely to continue. So अगर कोई STBT trade हमें लग रहा है या हम फ्लैश करेंगे तो डेफिनेटली अपडेट करेंगे. बट अगर स्टॉक वाइज में देखें तो रियलिटी पैक में काफी वीकनेस है. लास्ट वीक हमने गोदरेज प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था, वो ऑलरेडी आज 4 से 5% डाउन है. आज DLF ओवरऑल रियलिटी में भी पेन है. सो अगर DLF का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो DLF में काफी पेन है. वीकली स्केल पर अगर हम देखें तो पहले बार अराउंड 730 735 से घूमता था और आज वहां ही उसके नीचे फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना है. सो आई थिंक पोजिशनली शॉर्ट DLF भी अगर आप देखें तो काफी वीक लग रहा है. 713 भी चल रहा है. 715 से 716 की रेंज में आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं. 735 का स्टॉप लॉस रखिए, नीचे 680 के टारगेट के लिए. So this is one of the stock ideas that is weak from a week wise for a couple of days. DLF 715 716 से 717 की रेंज में शॉर्ट करें. 735 का स्टॉप लॉस रख के नीचे 680 के टारगेट के लिए. One more STBT we have flashed on terminal and for all our viewers is BOB. So as banking is in favor, total weakness PSU banks में भी काफी weakness है. So BOB हमारी सेल की सलाह है. 222 फ्यूचर्स अभी 218 219 से भी चल रहा है. 222 का स्टॉप लॉस रख के नीचे 210 के टारगेट के लिए BOB भी हमारी सेल है. दैट इज STBT ट्रेड. I think Anuj, you are there? I think there is some technical glitch. Yeah, I think he's back. Yeah, apologies for that. So can you please repeat the last trade? Like we have taken a note of ABB India. उसके अलावा I guess you were giving another trade. Yeah, so that is STBT trade within the PSU banking space. BOB, Bank of Baroda. Sell in the range of 218 219 218 219 की रेंज में 222 का स्टॉप लॉस रखे, नीचे 210 के टारगेट के लिए. So that is a STBT idea within the PSU bank space. ABB का जो पुट ऑप्शन हमने ऑलरेडी मेंशन किया है लेवल्स वाइज. निफ्टी में थोड़ी सी हमने नीचे से रिकवरी देखी है, बट अभी भी अगर बिगर ट्रेंड देखें तो अभी भी पेन में है. अपार्ट फ्रॉम IT वेरी सिलेक्टिव स्टॉक्स में ही मोमेंटम है. अपार्ट फ्रॉम दैट द बिगर ब्रॉडर मार्केट इज स्टिल इन पेन. So guys, better to play with that stance. Also try to avoid carrying positions overnight because overnight की वजह से काफी बड़े swings आ रहे हैं. So अगर आपका direction right है then it's benefit. अगर आपका डायरेक्शन गलत है तो डेफिनेटली आपके लॉसेस होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं. कल हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो डेफिनेटली मूव्स भी हमें मिलेंगे, उसमें काफी मोमेंटम भी रहेगा. बट ध्यान रखिए इंडिया विक्स भी शूट अप हुआ है, वोलेटिलिटी काफी है. सो आपको जो स्टॉप लॉसेस है वो भी मेंटेन करने बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रेडिंग के हिसाब से लिया तो प्लीज गाइस ट्राई टू डू इट फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंगल इटसेल्फ. इन्वेस्टमेंट अगर है तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट अगर ट्रेडिंग है सो प्लीज प्ले इट आउट
एट द सेम टाइम जैसे हम निफ्टी आईटी के बारे में बात कर रहे थे, लास्ट वीक भी हम काफी कन्विंस थे और काफी बुलिश थे इन्फोसिस पे. सो अगर आप मार्केट सेटअप वाइज देखें तो इन्फोसिस अभी भी उसका 3 से 4 दिनों में रिजल्ट आने वाला है एंड सेटअप वाइज अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है. तो जब तक 1920 1930 के ऊपर रहता है, हमें लग रहा है धीरे धीरे 2000 2040 तक का हमें लेवल्स दिख सकते हैं इन्फोसिस में. तो ये हमारा एक तेजी की तरफ जो ऑलरेडी लास्ट टाइम हमने इनिशिएट किया था वो अभी भी ओपन ही है. एक सेल की तरफ बीओबी हमने मेंशन किया है, एक एबीबी का पुट हमने बाइंग रेंज दी हुई है, पुट 6000 का पुट टू प्ले दैट स्विंग. So all in all, some recovery seen from lower levels, but the bigger trend is still pain and daily, weekly scale पे सब में ही pain है. So guys, please reduce your positions or या hedge your positions. अगर कोई counter आपका FNO में है, so try to reduce or try to hedge it. So at least you will have some better or some cushioning going forward. Sir, your view on IRCON? Railway stocks, after some pullback in last month, we have again seen the downward trajectory. So अगर इरकॉन का चार्ट सेटअप देखे हम, एक अच्छा बुल बैक आया था टूवर्ड्स from 180 190 to 220 तक, but again that stock is in downtrend. Weekly scale पे strong bearish candle, back again near its one major support zone of 175 178. but जब तक ये 190 नहीं निकलता है तब तक bias will be negative. There is no major momentum. Better to avoid bottom fishing in this counter. In fact, apart from Ircon, the entire railway theme is in pain. So better to avoid bottom fishing the entire sector. Sir, about Zomato at 280, what I have to do currently? Yeah, so Zomato, if you see, we have seen a very good rally in last couple of months. However, market weakness की वजह से अगर हम देखें तो सेटअप वाइज पिछले एक महीने में हमने काफी अच्छा फॉल देखा है फ्रॉम 300 टू 230 लेवल्स. सो एक पहले एक मेजर सपोर्ट हुआ करता था 235 240. सो वो 240 के नीचे भी ब्रीच किया है और अभी 227 चल रहा है. सो अगर आपने ट्रेडिंग के हिसाब से लिया है, सो डेफिनेटली गाइस यू शुड एग्जिट योर पोजीशन. इन्वेस्टमेंट है तो यू कैन होल्ड इट विद स्टॉप लॉस ऑफ 200. अगर ट्रेडिंग के हिसाब से है सो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए था. और 240 245 पहले ही एक मेजर सपोर्ट जोन था, उसके नीचे गया है. 245 के जब तक नीचे है, बायर्स वुड बी स्लाइटली नेगेटिव फॉर डाउनसाइड मूव टुवर्ड्स 2150 200 लेवल्स. Sir, can we sell Marico at the current levels? Short sell? They have just written sell, so I'm assuming it's short So sell. I think so if we see the setup wise, Marico is relatively better. जैसे हम बात करते हैं FMCG stocks में सेलिंग के बाद थोड़े से साइडवेज चले गए. तो अगर चार्ट सेटअप वाइज देखें तो Marico उतना वीक नहीं कंपैरेटिवली, डेली और वीकली स्केल पे एक रेंज में. सो आई थिंक बेटर है अवॉइड करें आप इस काउंटर को सेल करें, बिकॉज सेटअप वाइज रिलेटिवली बेटर है. और सच मार्केट की टर्मोइल में, मार्केट की वीकनेस में भी स्टॉक अगर होल्ड कर रहा है तो डेफिनेटली इट हैज स्ट्रेंथ. अवॉइड 660 की क्लोजिंग आती है तभी हमारी सेल करने की सलाह रहेगी मैरिको में, तब तक बेटर टू अवॉइड. Sir, bought HAL shares at 4820. 4820. So 4820 and the stock is already down 20% from that current levels. So as you've seen, defense stock also have been under pain. And if you see overall the defense shipbuilding stocks, so if we talk about HAL, 3850 3900 के नीचे फ्रेश ब्रेकडाउन दिया HAL ने, डेली स्केल पे भी एक बेरिश कैंडल बनाई है. So I think guys, the stock is already down 20-25% from your buying price. नेक्स्ट सपोर्ट आता है 3600 और फिर 3500. बेटर वुड एडवाइस कि कोई भी बाउंस अगर आता है 4000 4100 तक का, बेटर टू रिड्यूस योर पोजीशन एट हाई लेवल्स. Sir, Geofin 370 100 quantity. Geofin, what is the quantity? What is the buying price? Sorry, 370. 370. So if I see last couple of weeks, we have seen a very massive corrective move in across all the large cap companies, also mid cap companies also. So if I see the setup wise, जहाँ से रैली शुरू हुई थी around 270 से, वहाँ से वन वे रैली हमने 370 तक का देखा, and post that stock has been in corrective phase. Last couple of days में हमने corrective move देखा from 320 to 270 levels. So I think setup wise अभी भी पेन में
थोड़ा सा रिवर्सल आता है तब आप ऐड कर सकते हैं लोअर लेवल से, बिकॉज आपकी बाइंग प्राइस ऑलरेडी बहुत ऊपर है 370 के अराउंड. सो बेटर टू एट सम रिवर्सल. अभी कोई मेजर रिवर्सल नहीं है. 275 280 वापस एक बार स्टेबल होता है तभी हमारी ऐड करने की सलाह रहेगी. 250 के स्टॉप लॉस से ऊपर धीरे धीरे 300 320 के लिए. बट करंट जंक्शन पे अगर आप देखें तो चार्ट पे कोई मेजर रिवर्सल नहीं है. सो बेटर टू वेट. डोंट ट्राई टू बॉटम फिश इन बिटवीन. एंड बीइंग एन हेवीवेट स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट सम पुल बैक, बट एज ऑफ नाउ कोई भी मेजर रिवर्सल नहीं है चार्ट पे. So Chambal Fertilizers weekly view. Chambal Fertilizer weekly view. So if I open the chart of Chambal Fertilizers, broadly the stock is trading in a range from last couple of weeks. So let me open the weekly chart. So weekly पे एक नीचे यहाँ पे 450 का एक मेजर सपोर्ट है, ऊपर 500 का मेजर हर्डल है. बार बार 450 से घूम जाता है, ऊपर 500 पे अटक जाता है. सो हालांकि अभी सेटअप देखें तो पिछले 5 हफ्तों से लोअर उसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट है. 450, आई रिपीट 450 की क्लोजिंग के नीचे फ्रेश वीकनेस दिख सकती है टुवर्ड्स 420. सो आई थिंक अगर किसी को शॉर्ट करना है तो 450 के नीचे आप करें 420 के लेवल. Having said that, if I see the Nifty in Bank Nifty, it is still near its day's low. Bank Nifty is down by 750 points, Sensex is down by 1100 points, Nifty is down by 350 points. Mid cap, small cap, we have seen bleeding from all around the corner. So if we see overall India VIX is also spiking, guys, definitely this time is little bit difficult, and we have to absorb that there would be such phases where the volatility would be high, where the portfolio hit would be there, and the broader market would be in pain. But at such times, it's important to keep the sizing right, to follow stop losses. Third, keep position sizing reviews and try to keep it light overnight. So that would be the best part to do it. Apart from that, tomorrow we'll have Sensex expiry. So definitely we will like to play that swings on the expiry day itself. Overnight मैं avoid करूंगा suggest करने के लिए कोई भी overnight index में trade, because stock index already down है. Better आप जिस दिन opening होती है उसके हिसाब से trend के साथ play करें. I'll just repeat the levels. Nifty में 23,333, Bank Nifty में 48,500. जब तक ये दो लेवल नीचे है तब तक bias would be negative for this week or going forward. ट्रेड वाइज में बीओबी हमने एससीपीटी दिया है. एबीबी का पुट जो अभी चल रहा है वो 105 106 में चल रहा है. सो इफ अग्रेसिव प्लेयर्स है तो आप लोग प्ले कर सकते हैं 75 के स्टॉप लॉस से 150 के टारगेट के लिए. अभी भी 106 107 चल रहा है. Apart from that, broader market is in strong bear grip, so reduce your positions and stay light. Don't panic. Definitely, there would be good days also where you will get good opportunities on the long side. So guys, that will be all for today's. We have given a very quick overview, and not a quick overview, but a detailed overview of the entire week. And as Sir said, we have 2 expiries tomorrow. So please feel free to join them. And don't forget, we have Sensex and commodity expiry. अगर आपकी queries आज address नहीं हुए हैं तो please drop it on Stockholm. We'll be happy to revert. Thank you everyone. Thank you Arpit sir. Thank you all.